Good morning, kids. In today's class, we are going to discuss the current electricity JEE Main 2024 PYQ, the April shift. Again, the current electricity, the most essential topics are galvanometer, conversion of galvanometer to ammeter, voltmeter, meter bridge, iron Wheatstone network, then power dissipation, bulbs, kettle, series, parallel. You see all the and variation of thermal resistance, temperature quotient of resistance, alpha, temperature quotient of resistance. Okay, you have to avoid those problems where many circuits are there and they'll ask you to find out effective. Many resistance are there, very tough, lengthy. Some equations will apply, then we'll get the resistance. Those things you have to avoid. Leave those questions and focus on this one. Conversion of galvanometer to ammeter, voltmeter, then application problems, meter bridge, Wheatstone, power dissipation, bulb series parallel, kettle series parallel, heater coil, uh, power rating of heater, power dissipation, power rating of bulb. Next, series parallel, finding effective resistance, current divider, voltage divider formula, series parallel. Next, temperature quotient of resistance. Your entire current electricity past 10 years revolving around these ideas only. And in a very less time, you can revise all this. Very less theory is there. Even you have a time, so sit, revise all these things. So ये सब पढ़ना है एक बार. अगर एक बार आप पढ़ के रिवाइज करो, बाद में फॉर्मूलास याद करो, देन यू वेरी कॉन्फिडेंटली आप प्रीवियस PYQ सॉल्व कर सकते हो. So I'll start with the question. The number of electrons flowing per second in the filament of a 110 watt bulb operating at 220. इसमें कितने करंट फ्लो हो रहा है? Is asking about the flow of current. So power rating of the bulb, यहाँ पे बल्ब ले लेंगे, कितना वोल्टेज है, ऑपरेटिंग है 220 वोल्ट, वोल्टेज अप्लाई कर चुके हैं, इसका पावर रेटिंग है 110 watt. And for the bulb, what we can write? We can write it as P equal to V square by R. इसका पावर हुआ 110, 220 volt whole square by R. R equal to 22 into 22 into 100 by 110. यहाँ पे एक जीरो कैंसल हुआ, देन यहाँ पे 11, यहाँ पे 2, सो कुल मिला के 440 ओम रेजिस्टेंस है. कितना वोल्टेज अप्लाई कर चुके हम? 220 वोल्ट. सो व्हाट इज द करंट? यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो इज इक्वल टू आई इक्वल टू 220 वोल्ट अप्लाइड वोल्टेज, करंट इक्वल टू आई इक्वल टू V by R. V का वैल्यू 220, रेजिस्टेंस 440, 0 0, यहाँ पे 2, 0.5 एम्पियर. इस 0.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है. कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं पर सेकेंड? आई इज इक्वल टू, सो यहाँ पे हम n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड चाहिए बोले तो करंट बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो करंट का वैल्यू कितना है? 0.5. इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर ऑफ -19, 5/16 इंटू 10 टू पावर ऑफ 19, करीब 5/16 का वैल्यू. 5 डिवाइडेड बाई 16,
0.3125 into 10 to the power of 19. 31 2.5 into 10 to the power of 17. इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो हो रहे हैं. अगला क्वेश्चन लेंगे. The value of unknown resistance for which potential between B and D will be zero in the arrangement shown. Between B and D, B यहाँ पे है and D यहाँ पे, इसका potential difference zero. इसके होने के लिए is asking the resistance X. Resistance X कहाँ पे है? This one ना, यहाँ पे resistance है. तो what is the Wheatstone network? ये दोनों 12 ohm 12 ohm, ये दोनों series effective will be in parallel with this. यहाँ पे हमें resistance कितना मिलेगा? यहाँ पे हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे. इसका 24 यहाँ ले लो. 12 + 12 24 और ये दो 24. ये सब यहाँ पे दे आर इन effective of this branch. How much it will come? ये तो हुआ 6 ohm. सर कैसे 6 ohm? 12 सीरीज, इसका कुल मिला के 24 हुआ. 24 पैरेलल टू दिस 24 विल बी 12. ओके फाइन. यहाँ पे हम इसका वैल्यू हुआ 12 ohm. ए तो हुआ बी ए डी सी. इसका 1 ohm है, 1 ohm है. तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे? ये तो हुआ 0.5 ohm. ये तो ऑलरेडी दे गिवन 0.5 ohm. यहाँ पे 12 इफेक्ट विल बी 6 प्लस x. अननोन. सो ए वाला हुआ 12 तो 0.5 6 plus 6. Total for potential VBD to be 0. 12 by 0.5 is equal to 6 plus x plus 0.5. So x का वैल्यू हुआ 6 ohm. A simple idea of Wheatstone network. अगर आपको Wheatstone network पता है, you can manage a series parallel. And that's what my पिछले 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ. लाइक आप Wheatstone network series parallel, लाइक सेल के बारे में थोड़ा बहुत, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, KCL KVL, जस्ट बेसिक्स. एक कम समय में आप ये सब बेसिक्स पढ़ सकते हैं. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The value of resistance R and radius stretched till it becomes radius R by 2. New resistance of stretched wire is X R, the value of X. यहाँ पे हम एक वायर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. इसका रेडियस कितना हुआ R. इसका रेजिस्टेंस कितना है कैपिटल R. इसका लेंथ L और इसका रेजिस्टिविटी लेट इट बी रो. ये जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू रो L बाय पाई R स्क्वायर. हम इसको स्ट्रेच करेंगे. इस रेडियस बिकम्स R by 2. देन जब इसका रेडियस कम हो जाएगा, देन द लेंथ हैज टू इंक्रीज. और टोटल वॉल्यूम जो वॉल्यूम है वो इट विल रिमेन कांस्टेंट. Why volume should remain constant? Because mass will remain constant, density will remain constant. Then volume has to change. Then volume remains same, the length has to change. We know volume equal to
L pi r square, it should be equal to L pi r by 2 whole square. So यहाँ पे L will become 4 capital L. इसका नया रेजिस्टेंस कितना है हम फाइंड आउट करेंगे. R डैश इक्वल टू रो L पाई R by 2 होल स्क्वायर. L का वैल्यू हुआ 4 कैपिटल L पाई R स्क्वायर, ये हुआ 4. Okay, this will become 16L. 16 रो L पाई R स्क्वायर. इसका टोटल वैल्यू हुआ अब नो 16R. Okay, fine. Sir, a volume remains constant is very important because मास रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे कितना मास है उसका मास वही रहेगा, और मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी विल नॉट चेंज. ओके फाइन. सो डेंसिटी कैंसिल हो, जो वॉल्यूम v इक्वल टू v डैश. सिंपल प्रॉब्लम. आपको इसको थोड़ा तो जस्ट आपको रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इक्वल टू आर इक्वल टू रो एल बाई, वो फॉर्मूला अगर आपको याद रहे तो मैनेज कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. In the given figure, an emitter consists of 240 ohm coil connected in parallel to a 10 ohm shunt. The reading of emitter is 240 ohm coil. ये जो एमीटर है, लेकिन इसका एक्सपेंशन कर देंगे 140.4 ओम. इसका अप्लाइड ईएमएफ 20 वोल्ट. इसका रेजिस्टेंस गैलोमीटर है, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर कॉइल इज 240 ओम. और इसका यहाँ पे हम 10 ओम शंट रेजिस्टेंस, और गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हुआ 240 ओम. द रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रीडिंग पूछ रहे हैं. सो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. सो 240 ओम पैरेलल टू, सर लाइक व्हाट इज दिस वन. ये जो कॉइल, इसको कॉइल ही हम रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर कॉइल, इसको हम सिंपल बोल रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इन पैरेलल विद द शंट. शंट बोले तो लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, इसको हम शंट बोलते हैं. सो व्हाट डू मीन बाय शंट? लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल. यहाँ पे गैलोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर कॉइल, इन शॉर्ट वी आर कॉलिंग कॉइल रेजिस्टेंस. एंड लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल वी आर कॉलिंग शंट. आई थिंक सम ऑफ ये तो थियोरेटिकल, जब आप थ्योरी पढ़ते हो, these are the typical words. अगर ये याद रहे तो लिटिल बिट इजी है. इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस ले लेंगे. रीडिंग ऑफ एमीटर, एमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे पहले. 240 इंटू 10 बाय 240 प्लस 10, 2400 बाय 250, 240 बाय 25. इसका 5 जा 240 बाय 25, 8.4 रेजिस्टेंस हुआ 8.4 ओम. टोटल करंट, इसका और एक सर्किट डाल देंगे. इसका रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है 8.4 ओम. यहाँ पे हम रीडिंग ऑफ करंट, ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, दिस विल बी दी रीडिंग ऑफ एमीटर.
ये जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, यही अमीटर का रीडिंग हो जाता है। इसी को हम अमीटर रीडिंग कहते हैं। So this should be equal to I is equal to 24 by अप्लाइड ईएमएफ। अप्लाइड ईएमएफ कितना है? 24 वोल्ट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो दिस शुड बी 140.4 प्लस 8.4, 24 by 148.8। इसका वैल्यू हुआ 161 एम्पियर और 161 एम्पियर, मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में पूछ रहे हैं, सो द ऑप्शन विल बी 161। अगला क्वेश्चन लेंगे। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू मीन बाय टर्मिनल? यहाँ पे इस ड्रॉप पूछ रहे हैं वो लोग। देन लगे ए जो 4 ओम, इसका इफेक्टिव कितना हुआ? 2 ओम। रियली वेरी सिंपल प्रॉब्लम। समहाउ आपको थोड़ा सा सीरीज पैरेलल का आइडिया रहे तो, एंड सेल कॉन्सेप्ट, ये काफी है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ 3 वोल्ट, इसका 1 ओम। ये दोनों रेजिस्टेंस है, एक बार देख लो। 4 ओम, 4 ओम, ये दोनों पैरेलल में है। इसका इफेक्टिव कितना हुआ? 2 ओम। करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे केवीएल लगा दो। अगर आप यहाँ पे दौड़ रहे, समझ लो, अगर आप दौड़ रहे, जो टर्मिनल पे आप एंटर करते हैं वो एंड हो गया पॉजिटिव, जो टर्मिनल से आप निकल रहे बाहर रजिस्टर से, वो हुआ नेगेटिव। यहाँ पे आप एंटर हो रहे पॉजिटिव, करंट यहाँ पे एंटर होता है पॉजिटिव, करंट यहाँ से निकल रहा है बाहर, सो नेगेटिव। लाइक दिस विल गिव द पोलैरिटी। ओके फाइन। सो यहाँ पे लूप इक्वेशन लगा दो, 3 + 3, यहाँ पे हम एंटर हो रहे हैं, तो देखो हम पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल तरफ मूव हो रहे हैं। सो ये दिस विल बी राइज इन ड्रॉप। सो राइज इन ड्रॉप के लिए -2i, सो फॉल इन ड्रॉप के लिए -2i, ए फॉल इन ड्रॉप के लिए -i इक्वल 0। आई इक्वल टू कितना हुआ? 1 एम्पियर। जो हमें पूछ रहा है ऐसा लगे दे आर आस्किंग द टर्मिनल पोटेंशियल। इसको हम ए एंड बी टर्मिनल्स बोलते हैं। एंड जो 3 वोल्ट है, दिस विल बिकम ईएमएफ, वीए विल बिकम टर्मिनल वोल्टेज। सो यहाँ पे हम सिंबल्स लगा देंगे। ई विल बिकम ईएमएफ ऑफ सेल, एंड ये जो वीए भी बोलते हैं ना, ए एंड बी, ये बैटरी का टर्मिनल्स बोलते हैं। और वीए भी है, दिस विल बिकम टर्मिनल वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस। सो दे आर आस्किंग वीए भी। सो हम क्या करेंगे, फिर यहां से केवीएल लिख देंगे ए टू बी। इसका वैल्यू हुआ +VA -3 +I -VB 0, I into 1 -VB 0। So VAB equal to 3 minus I, 3 minus 1, 2 वोल्ट। EMF अलग है, टर्मिनल वोल्टेज अलग है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो गए तो देन द टर्मिनल वोल्टेज विल बिकम इक्वल टू अप्लाइड EMF। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, देन टर्मिनल वोल्टेज, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 रहे तो देन करंट पास होता है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0।
ओके, सो यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज कितना हुआ, VAB इक्वल टू 2 वोल्ट। ये हुआ हमारा आंसर। वेरी सिंपल। अगर बैटरी, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सेल के बारे में पता है तो फिनिश, और यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ले लेंगे। Resistance of a wire at 0 degrees, 100 degrees, and T degrees is found to be 10, 10.2, 10.1. The temperature T in Kelvin scale. T degrees पर पहले हमें अल्फा के बारे में कुछ भी पता नहीं। So resistance at 0 degrees, resistance at 100 degrees is equal to resistance at 0 equal to 1 plus alpha. No, R not equal to 1 plus temperature will be 100 minus 0. This resistance at 100 degrees is 10.2. At 10 degrees, at 0 degrees, it is 10, 1 plus 100 alpha. So this will be 0.2, 1 plus 10 alpha. 10 alpha equal to 1 plus 1 minus 0.2. So 10 alpha will be 0.8. Alpha will be 0.08. Then at what temperature? Then at 10.95 ohm, R naught, this will be 10, 1 plus alpha, T minus 0 degrees. First we'll calculate T degrees, then we'll convert into Kelvin. So this will be 0.10.95 equal to 10 plus 10 alpha T. So 0.95 equal to 10 alpha T. So temperature will be this will be at T degrees Celsius. This will be 1000 alpha. 1000 alpha equal to 1 point. So this will be 1000. So this will be 18 to 10 to power of minus 4. 18 to 10 to power of minus 4. Then this will become 950 by 8. 950 by 8. 118.75 degrees Celsius. So in Kelvin, now let me check the other values. Compared to 0 degree, no, we are comparing this with 10.95 with 0 degrees Celsius. 10 alpha T, 0.95. 10 alpha is missing. Alpha, this will be 18 to 10 to the power of minus 3.
95 by 8. 95 divided by 8. 11.875. The temperature of this will be some calculations I'm missing. Just let me check out. Let me do all the calculation. 10.2, 10,000 alpha. 0.2 equal to 1000 alpha. Alpha will be 0.2. 2 into 10 to power of minus 4. Alpha will be known. This will be alpha 2 into 10 to power of minus 4. This will be 0.95. I don't know this will become 10 or 0.95 only. So 995 into 10 to power of minus 2 divided by 2 into 10 to power of minus 3. $450. So temperature in Kelvin will be 273 plus 450. There will be 3 plus 12, 13, 3, 1 carry, 733 Kelvin. The answer should be 733 Kelvin. To take the next question. A value of resistance is divided into 10 equal parts. Parallel and so on. Now resulting pairs of parallel commutator in series. The equivalent resistance of final combination is. Okay, यहाँ पे a wire of resistance 20 ohm is divided into 10 equal parts. Resulting pairs. A combination of two parts are connected in parallel and so on. Now resulting pairs of parallel combination are connected in series. The equivalent resistance of final combination is. Very good problem. Huh? यहाँ पे like we have resistance 20 ohm divided into 10 equal parts. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. इसका हर एक का रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Each one is having 2 ohm. हर एक का यहाँ पे पार्ट का कितना कितना रेजिस्टेंस है इट विल 2 ओम इसका 2 ओम 2 ओम 2 ओम नीचे लिख चुका हूँ फिर भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ देन दो दो पार्ट लेके दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल
Now this will become 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? विल बिकम 5 ओम. इसका इफेक्टिव हर एक पार्ट का है, कितना है? 2 ओम है. फाइन. यहाँ पे हम कलर कर रहे हैं हर एक पार्ट का. नो, इस 2 ओम का रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2 ओम पैरेलल टू 2 ओम विल बिकम 1 ओम. 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम. टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 5 ओम. दिस विल बी योर आंसर. यहाँ पे लैंग्वेज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सबसे लाइक हिंदी में, या ओके फाइन, आप हिंदी में समझ लो, बट एग्जाम तो आपको इंग्लिश में ही रहते हैं ना. So you should get habituated both for Hindi as well as English. From Hindi you understand, but you should really improve your English, because क्या करते हैं आप लोग, like without this language idea not possible. तो बहुत सारे टीचर्स आपको हिंदी में पढ़ाते हैं, ओके नथिंग रॉन्ग, अपने मातृभाषा में पढ़ना, एवरीथिंग इज फाइन, बट आप एग्जाम इंग्लिश में लिख रहे हैं. दिस इज द प्रॉब्लम. हिंदी में पढ़ो, हिंदी में समझो, और हिंदी में एग्जाम लिखो, फाइन, गुड, नो इश्यू था, सुपर. बट आप हिंदी में सुन के, हिंदी में समझ के इंग्लिश एग्जाम लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली एग्जाम में क्या चाहिए आपको? बी गुड इन इंग्लिश ऑल्सो. सो डू गेट हैबिचुएटेड थोड़ा इंग्लिश के लिए, वर्ड्स का, व्हाट इज द मीनिंग, कैन, शुड बी, दिस वेरी एसेंशियल. सी एग्जाम इज ऑल अबाउट नॉलेज एंड स्किल. आपके पास नॉलेज है, एग्जाम का स्किल नहीं, यू डोंट गेट रैंक, आपको रैंक नहीं आता है. तो आपको नॉलेज भी चाहिए, एग्जामिनेशन का स्किल भी चाहिए. आप हिंदी में सुन के, हिंदी में समझ के, हिंदी में पढ़ रहे हो, बट एग्जाम इंग्लिश में लिख रहे हो, देयर इज अ इशू. यू हैव टू improve your English. So reading and listening English is something very important. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. The ratio of heat dissipated per second through the resistance 5 ohm and 10 ohm in the circuit. I think it's a, ये तो टोटल करंट डिवाइडर का heat dissipated per second. Heat dissipate means power dissipated पूछ रहे हैं. देन ये दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हुआ? 5 ओम, 5 ओम एंड इसका 10 ओम. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ दिस विल बी, यहाँ पे 20 ओम हुआ, 10 ohm, 20 ohm. This will be 50 by 15. 50 by 15, 10 by 3 ohm. तो यहाँ पे करंट कितना हुआ? करंट का वैल्यू 10 by 20 plus 10 by 3, 30 by 70. So करंट का वैल्यू कितना हुआ? 3 by 7 एम्पियर. तो ये 10 by 3, यहाँ पे करंट हो 3 by 7 एम्पियर. इसका करंट ले लेंगे I1 and this is I2. I1 equal to I into 10 by 10 plus 5. 3 by 7 into 10 by 15. 2A3. 2 by 7 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है. I is equal to I1 plus I2. I का वैल्यू कितना है? 3 by 7 है. A 2 by 7 है. I2. I2 is equal to 1 by 7 एम्पियर. पावर डिसिपेशन I1 square R1 by I2 square by R2.
I1 square 2 by 7 whole square R1 into 5 I2 square 1 by 7 whole square into 10. Okay, this will be 4 2. Okay, this will be the ratio P1 by P2. Okay, fine. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. A galvanometer of resistance 100 ohm when connected in series. A galvanometer of resistance 100 ohm when connected in series with 400 ohm measures a voltage up to 10 volt. The value of resistance required to convert galvanometer into ammeter to read up to 10 ampere. यहाँ पे हम एक galvanometer ले लेंगे. When connected say with 400 ohm, galvanometer resistance कितना है? 100 ohm. 10 volt. Measure say voltage up to 10 volt. So this 10 volt is equal to Ig into G plus Ig into R. 10 equal to Ig का वैल्यू पता नहीं. ओके फाइन. G का वैल्यू 100 प्लस 400. सो Ig का वैल्यू हुआ 10 by 500. So this will be 0.2. 0.2 into 1 by 10, 0.1 or 2 milliampere. 20 milliampere. It was 2 into 10 to the power of minus 2. 20 milliampere is the Ig का value. The value of resistance required to convert the galvanometer into ammeter to read up to 10 ampere. इसी galvanometer को हम क्या करते हैं कि इसको ammeter बना देते हैं. इसका शंट वैल्यू कितना है? तो यहाँ पे I max is equal to A over Ig. I max Ig. शंट का वैल्यू पूछ रहे. सो आई मैक्स का वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर है. आईजी का वैल्यू हम पता है एस वैल्यू. तो ये दोनों पैरेलल है. गैलोमीटर रेजिस्टेंस एंड शंट रेजिस्टेंस ये दोनों पैरेलल है. तो इसके सो हम क्या लिखते हैं कि आई जी इंटू जी इक्वल टू आई मैक्स माइनस आई जी इंटू एस. आई जी का वैल्यू 20 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 3. जी का वैल्यू 100. आई मैक्स का वैल्यू 10. 20 into 10 to the power of minus 3. इसका शंट वैल्यू S. S equal to this will be 2. 10 minus 0.2.
10/9.8. Shunt का value, okay, 10, 20, 0.02. It's equal to 2 by 9.98. 2 into 10 to power of -2. इसका रेजिस्टेंस वैल्यू, शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है. दिस विल बी 1. ये तो हुआ 1, 2 यहाँ पे. IG का वैल्यू 20 मिली एम्पियर. 10 minus 20, 10 to power 0.02, 9.98, 2 by 9.8, 2 by 9, 2 divided by 9.98. इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लूँ मैं. 2 divided by 9.98, 0.2. इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू is equal to 0.2004. इसका वैल्यू कितना करेंगे हम? 2.1, 0.2. So this will become 22 into 10 to power of -1. और इसका हम 20 into 10 to power of -2 ओम लिख सकते हैं. ओके फाइन. एक्स का वैल्यू, ये तो कंप्लीट थ्योरी हुआ. आप देख लीजिए. गैलोमीटर है इन सीरीज विद रेजिस्टेंस एंड गैलोमीटर इन पैरेलल. In an experiment to determine the galvanometer resistance by half displacement, the plot of 1 by theta versus the resistance R of the resistance box is shown in figure. The figure of merit of the galvanometer. एक galvanometer resistance directly theory of galvanometer अगर वो आपको याद रहे तो okay, fine, good. Otherwise you have to skip this question. तो galvanometer का है. तो अगर आप galvanometer का theory याद रहे तो current is equal to K into theta, where K is called as the figure of merit. इस figure of merit हम K value find out करना है. और यहाँ पे हमें theta, the angular displacement of the pointer versus the resistance connected. R is the resistance of box shown in figure. तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेंगे. So 2 by G plus R equal to K theta. Okay, fine. So 1 by theta equal to K. So 1 by theta equal to G by K by 2. R by K by 2. ओके फाइन. तो इसका स्लोप कितना है यहाँ पे? 1 by theta वर्सेस R एक ग्राफ दे चुके हैं. सो ये जो आपको दिख रहा है, सो दिस विल बी स्लोप. ये स्लोप यहाँ पे हम इस ट्रायंगल को ले लेंगे. जो येलो कलर का ट्रायंगल है, तो इसका स्लोप हुआ K by 2 इक्वल टू स्लोप. और इसका वैल्यू कितना है? स्लोप विल बी 1 minus 1 by 2 by 2 equal to 1 by 4. K का वैल्यू हो 1 by 2.
Or this will be 5 into 10 to power of minus 1 ampere per division. ये तो कंप्लीट theoretical है, कुछ भी नहीं. या तो the graph, from graph we'll get the value of k. बाकी ये सभी तो theory है. It takes half an hour to explain all these things. Just galvanometer, half deflection method, construction of galvanometer. Just read it. You have this particular formulas. These are the formulas. Next question ले लेंगे. In the figure, R1, R2, R3, R4 battery idle. Equivalent resistance circuit current supplied by the battery. इसका equivalent. ये जो ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल है. अगर आप करंट यहाँ पे भेज रहे हो, ये जो करंट आई, ये ब्रांच होके I2, I4 एंड I3. तो ये तीनों रेजिस्टर्स क्या है? ये तो पैरेलल है. So R2, R3, R4. इसका effective in series with this one. I is equal to 12 by R1. इसका effective resistance calculate करेंगे. R2, 3, 4 equal to 1 by R2, 1 by R3, 1 by R4, 1 by 8, 1 by 4, 1 by 8. 1 by 8, 1 by 8, ये तो हुआ 1 by 4. 1 by 4, 1 by 4 हुआ 1 by 2. तो R2, 3 वैल्यू का कितना हुआ? R2, 3, 4 का वैल्यू हुआ 2. वन एम्पियर. तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? बैटरी 1 एम्पियर. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट पूछ रहे हैं. रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट तो 12 ओम है. आर इक्विवेलेंट तो R1 प्लस R2, 3, 4, ये तो हुआ 10 प्लस 2, 12 ओम. आंसर वेरी सिंपल. सीरीज पैरेलल. जस्ट सीरीज पैरेलल का अगर आपको आइडिया रहे तो दैट इज इनफ. आप मैनेज कर सकते हैं. अभी करीब करीब 12 क्वेश्चन है. सो इसको हम वीडियो स्प्लिट करेंगे पार्ट ए पार्ट बी बोलकर. अगला वीडियो में आप बाकी बचे 2024 अप्रैल शिफ्ट का अपलोड कर दूंगा. थैंक यू बच्चों. प्लीज रीड theory, read formulas. You have to daily memorize. We have less time. Okay, we'll meet again in the next video. Till then, bye. Take care. All the best.